Assalamu alaikum. Dear students, I am here with another lecture of signal and system. Today we will talk about LTI systems which are described by differential and difference equations. As you know that we have two kinds of systems, one which take a continuous form of the input and produce a continuous output. They are called continuous time systems, and similarly the other one where we have a discrete input and a discrete output is produced. So such systems are called discrete time systems. So many physical systems can be described with the help of differential and difference equations. If the system is continuous, it is described with the help of a differential equation, and if it is discrete, its description is given with the help of a difference equations. So today we will talk about, in the first half of this lecture, we will talk about the continuous time systems and the corresponding differential equations which describe them. And then in the second part we will talk about discrete time systems and the corresponding difference equations which describe them. So let's start our lecture. So in many physical system, like here, if we have an RC circuit, or if we have a mechanical system where a car is moving, force is acting upon the car, and the car is moving in some direction. So these systems can be effectively described with the help of a differential equation. So their input and output are related through constant coefficient differential equations. So differential equations basically describe the behavior of this system, and they provide us an implicit specification of the system. To determine the explicit expression, we need to solve the differential equation, and in this lecture you will see that to solve a differential equation we normally need some auxiliary conditions or some initial conditions under which they provide a specific relationship between the input of the system and output of the system. So in short, uh, some real world physical systems are can be described with the help of differential equations if they are continuous time, and difference equation if they are discrete time. So let's consider a very simple system which is described by a first order differential equation like this: d by dt of yt plus 2 times yt is equals to xt, where yt is the input, where yt is the output and xt is the input of the system. And let's also assume that for this particular system our input signal is given like this: x of t is k e raised to power 3t ut. In order to solve this differential equation, we need to determine the particular solution ypt and the homogeneous solution of this differential equation, which is known as yht. So overall our yt, the output will be equals to sum of particular solution plus the homogeneous solution. And in the slides which follow we will describe how to find the particular solution for this particular differential equation, or the homogeneous part for this particular equation. So to determine the homogeneous solution, we set the right hand side of this equation equals to 0. So x of t को हम 0 assume करते हैं. So our differential equation then becomes d over dt of yt plus 2yt is equals to 0. So if we solve this part,
if we set right hand side of this equation equals to 0 and find the solution of this equation, this is called the homogeneous solution for this particular differential equation. Similarly, if we want to find the particular solution ypt for this particular differential equation, what we do that we assume a solution which is exactly similar to the form of input. Since our input x of t is given like k e raised to power 3t ut, where ut means it is only the input signal is only non-zero for t greater than equals to 0. So we take a solution, or we assume a solution for this particular differential equation which has the exact similar form as the form of the input. So we assume that our ypt will be equals to some capital Y. This capital Y is some constant e raised to power 3t, एग्जैक्ट सेम जैसे कि आपके पास इनपुट थी, इनपुट वाज k e raised to power 3t. सो वी अज्यूम कि हमारे पास जो ypt है दैट इज सम y e raised to power 3t और फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये जो y है कांस्टेंट, जो कैपिटल Y है, दिस नीड्स टू बी डिटरमिन. सो इसको डिटरमिन करने के लिए हम ये ypt जो हमने सोल्यूशन अज्यूम किया है, हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, जो लास्ट स्लाइड पे आपके पास इक्वेशन 1 थी, उस इक्वेशन 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो वी गेट 3y e raised to power 3t because d of dt of y e raised to power 3t. अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे सो यू विल गेट 3y e raised to power 3t. सो 3y e raised to power 3t plus 2 time y of t, so plus 2 time y e raised to power 3t, and that is equals to x of t, and our x of t is k e raised to power 3t. सो इसके साथ ut भी है, लेकिन यहाँ पे हम ut इस वजह से नहीं ले रहे बिकॉज एवरीथिंग वी आर assuming over here that this solution only exists for t greater than 0. so यहाँ से आपके पास इन सब तमाम टर्म्स में से y e raised to power 3t को हम कॉमन ले सकते हैं. सो वी कैन गेट 3y plus 2y is equals to k, or 5y is equals to k, or y is equals to k over 5. So our particular solution will be of this form: ypt is k over 5 e raised to power 3t, क्योंकि हमने इस कैपिटल Y की वैल्यू मालूम कर ली है, and that value is k over 5. So our particular solution will be k over 5 e raised to power 3t. Now let's talk about the second part, जहाँ पे हमने homogeneous solution for this differential equation जो है वो मालूम करना है. So homogeneous solution मालूम करने के लिए we assume that our yht is some a e raised to power st, where a is again a constant whose value needs to be determined. So if we substitute this solution into our differential equation, which was dy over dt, something like that, so a s e raised to power st plus a e raised to power st will be equals to 0. so यहाँ से अगर आप जो है वो a e raised to power st को कॉमन लें, this will be equals to 2a e raised to power st. यहाँ पे this term was dy over dt. अगर आप इसको with respect to जो है वो t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a s e raised to power st आ जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे एक 2 मिसिंग है, लेट मी राइट ओवर हियर. सो प्लस 2 टाइम्स a e raised to power st जो है वो आपके पास इक्वल्स टू 0 है. सो अगर आप यहाँ से a e raised to power st कॉमन लें तो देन a e raised to power st s plus 2 is equals to 0. फॉर दिस इक्वेशन we must take, ये कब 0 होगी, when we take s is equals to -2. so if we take s is equals to -2, so अगर आप s की जगह -2 पुट कर देंगे तो इसका मतलब है तब ये इक्वेशन 0 होगी.
s की सिर्फ इस वैल्यू के लिए, यानी s की वैल्यू -2 के लिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो ये सोल्यूशन है that was equals to a e raised to power st, since s is equals to -2, so your solution is a e raised to power -2t is this solution of equation. अब हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन था y ऑफ t that was equals to y of ht plus y of pt, homogeneous part plus the particular solution. So homogeneous part का जो solution हमारे पास आया है that is a e raised to power -2t, और जो particular solution है y of ypt that is k over 5 e raised to power 3t, which we determined in the previous slide. So this is our complete solution. अब ये जो solution है हमारी differential equation का, this is at the moment this solution is not explicit. What we mean by explicit? By explicit we mean that this is the general solution of differential equation. However, still we don't know what is the value of a or what is the value of k. जब तक हमें ये वैल्यूज़ मालूम नहीं होंगी तो ये solution जो है ये explicit solution नहीं होगा, ये specific जो है वो solution आपके पास नहीं आएगा। तो इस specific solution को मालूम करने के लिए we need one thing which is known as auxiliary conditions or initial conditions. अगर हमारे पास ये auxiliary conditions specify की जाएं, only then we will be able to find the explicit solution for this differential equation. Now we have already assumed that our system is LTI, linear and time invariant. Furthermore, we also assume that our system is causal. काजल सिस्टम वो वाले सिस्टम होते हैं कि जिनमें जिनकी जो आउटपुट होती है वो करंट इनपुट और प्रीवियस इनपुट पे डिपेंडेंट हो सकती है, लेकिन उसमें कोई फ्यूचर इनपुट जो है वो फ्यूचर इनपुट जो है वो उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो काजल है। अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारा सिस्टम काजल है तो विद दिस assumption of causality the auxiliary conditions becomes very simple. और वो causality का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर हम ये अज्यूम करें कि सिस्टम काजल है तो इसका मतलब ये होगा कि yt will be equals to 0 for t less than 0 if xt is equals to 0 for t less than 0. ये वही बात कि जब तक आप इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे आपके पास आउटपुट भी जो है वो नहीं आएगी। तो इस कंडीशन को बेसिकली इनिशियल रेस्ट कंडीशन भी कहा जाता है कि योर सिस्टम इज एट रेस्ट। तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि जब तक आप अपने सिस्टम में इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे तो उस वक्त तक उसमें सिस्टम जो है वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। एक और इससे रिलेटेड कंसेप्ट अगर उसकी टर्मिनोलॉजी में मैं बात करूं तो शायद ये ज़्यादा समझाना आसान हो जाएगा। हमने पढ़ा था ज़ीरो स्टेट रिस्पांस और ज़ीरो इनपुट रिस्पांस। ज़ीरो इनपुट रिस्पांस क्या था कि अगर आप अपने सिस्टम को इनपुट अप्लाई ना करें, कोई इनपुट ना दें, एंड इफ़ योर सिस्टम स्टिल जनरेट्स द आउटपुट, तो इसका मतलब ये है कि इनपुट ज़ीरो होने के केस में भी आपका सिस्टम जो है वो आउटपुट जनरेट कर रहा है। सो सच अ रिस्पांस इज कॉल्ड ज़ीरो इनपुट रिस्पांस। लेकिन ज़ीरो इनपुट रिस्पांस काजल सिस्टम्स के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये अज्यूम करें कि सिस्टम काजल है तो इसका मतलब है कि ज़ीरो इनपुट रिस्पांस इसका ज़ीरो होगा, यानी जब तक आप इनपुट नहीं देंगे उस वक्त तक आउटपुट नहीं आएगी। सो अगर हम ये अज्यूम करें कि जब तक हम इनपुट नहीं दे रहे उस वक्त तक सिस्टम आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि हम t को ज़ीरो पे अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो y ऑफ ज़ीरो है दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज अभी तक हमने इनपुट अप्लाई नहीं की। सो विद दिस कंडीशन ये जो लास्ट में हमने इक्वेशन लिखी थी वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। सिंस y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर हम उसमें t को ज़ीरो पुट करें तो दिस इक्वेशन सिंपली रिड्यूसेस टू a plus k over 5 is equals to 0 or a is equals to minus k over 5. So अगर हम a की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करें तो our yt is k over 5 e raised to power 3t minus e raised to power minus 2t. So this is now the explicit solution for our system
k जो है ये तो इनपुट का वही कांस्टेंट है जो इनपुट में अपीयर हो रहा था, उसके अलावा बाकी अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई जो आपने मालूम न की हो, बाकी एवरीथिंग जो है वो आपको नोन है. सो दिस इज नाउ द स्पेसिफिक सोल्यूशन और द एक्सप्लिसिट सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम, जिसमें आपने अब ये ऑक्सिलरी कंडीशन अप्लाई की है तो आपको ये दिस इज प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लिसिट सोल्यूशन. सो okay, so let's summarize some a few points before moving to the second part, which is about the discrete time systems, and those systems are described with the help of difference equations. So here what we have discussed in these slides is basically continuous time systems which are described by the help of differential equations. So we have seen here that the differential equations have two solutions, one solution which is called the particular solution and one solution which is called the homogeneous solution. The homogeneous solution of differential equation is also called the natural response of the system, and to exactly specify the exact relationship between input and output of the system, we need to provide auxiliary conditions. So जब तक आप auxiliary conditions जो है वो mention नहीं करते, initial conditions mention नहीं करते, तो exact relationship input और output के दरमियान आप find नहीं कर सकते. सो ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया इस फर्स्ट पार्ट में, ये कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स के बारे में था जो डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब किए जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड से हम डिफरेंस इक्वेशंस की बात करेंगे, विच इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. वी विल टॉक अबाउट द difference equations which are used to represent the discrete time systems. So they are just the counterpart of differential equations, but differential equations are basically used for a continuous time system, whereas difference equations are used to represent the discrete time system. So general form of a difference equation is like this: a summation from 0 to capital N a k y n minus k, and on the right hand side a summation from 0 to m b k x n minus k. So x is the input and y is the output. So general in the general form, the output at any time n, for example, is dependent not only upon the inputs but also on previous outputs. सो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंडेंस होती है. बेसिकली इस थोड़ा सा इसको मज़ीद हम आगे चल के ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं. एक वो जिनमें आउटपुट सिर्फ इनपुट पे डिपेंड करती है और एक वो जिनमें आउटपुट प्रीवियस आउटपुट्स पे भी डिपेंड करती है. बट सिंस इट इज़ द जनरल फॉर्म, सो इट इंक्लूड्स ऑल द टर्म्स जिसमें x जो हैं वो इनपुट्स हैं और बेसिकली ये m प्रीवियस इनफैक्ट m+1 प्रीवियस इनपुट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके m तक ये समेशन है. सो m+1 इनपुट्स पे डिपेंडेंट है और उसके अलावा n आउटपुट्स पे डिपेंडेंट है. आपके पास जो आउटपुट है वो एट एनी टाइम. So we can also solve this difference equation similarly as we solve the differential equation. We can solve the homogeneous part and things like that. And if the systems are LTI and further we assume that they are causal, then auxiliary conditions are also required to find a specific solution of this difference equation. And the auxiliary condition is basically like this: that if x of n is 0 for some n less than n naught, then y of n will also be 0 for n less than n naught, which means basically that
until the application of input. Until the time the input is not applied, there would be no input. So that is known as initial rest condition. So to find the particular solution, to find the specific explicit solution of this difference equation, we need to have this condition of initial rest as well. Okay, so in the general form of this difference equation, we can write y of n as equals to 1 over n naught bk x n minus k minus a k y n minus k. So k is equals to 0 वाली जो टर्म थी इस इक्वेशन में प्रीवियस स्लाइड पे, वो हमने सेपरेट कर ली है. अगर आप k को 0 पुट करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये समेशन की जो समेशन है, इफ इट इज़ फ्रॉम 0 टू कैपिटल n, तो जब आप 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट a नॉट y ऑफ n. सो इस a नॉट से आपने सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है. सो y ऑफ n इज़ 1 ओवर a नॉट and this m inputs, m plus 1 inputs from 0 to m and n inputs from 1 to n. So output y of n is dependent upon m plus 1 inputs and n outputs in the general form. So this equation, basically we will talk about this in the next slide. This is basically a recursive equation where we have to compute the different values of y of n using a recursive procedure. और इस recursive procedure में हमारे पास जो है वो कुछ हम assumption करेंगे. For example के हम ये assume करेंगे कि आपके पास जो इनिशियल रेस्ट की कंडीशन है, जब तक वो यूज़ ना करें तो आप इस रिकर्सिव इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते. बट इन अ स्पेशल केस व्हेन दिस n कैपिटल N इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये सिंप्लीफाई हो जाती है. एंड दैट केस y ऑफ n इज सिंपली इक्वल्स टू bk ओवर a नॉट एक्स n माइनस k, which means that the output is not dependent upon previous outputs. It is only dependent upon previous m plus 1 inputs only. So अगर ये वाला केस हो तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट की डिपेंडेंस है वो सिर्फ इनपुट्स पे रह जाती है, किसी प्रीवियस आउटपुट पे जो है वो डिपेंडेंस नहीं रह जाती, डिपेंडेंस नहीं होती. और इस केस में अगर आपके पास ये वाला केस है जिसमें आउटपुट की डिपेंडेंस सिर्फ प्रीवियस इनपुट्स पे है, तो देन दिस इज़ अ नॉन रिकर्सिव इक्वेशन. और इस केस में इस तरह के सिस्टम को जिसमें आउटपुट की डिपेंडेंस सिर्फ प्रीवियस इनपुट्स पे होती है, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एन FIR system. FIR stands for finite impulse response. So for such case, when the output dependence is only upon the previous inputs, then such a system is called FIR system. However, when n is greater than equals to 1, then there is also the previous dependence on previous outputs, and such a system is called IIR system, infinite impulse response system. So discrete case में हमारे पास दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एक FIR finite impulse response system और दूसरे infinite impulse response system. तो अगर तो आपके पास आउटपुट की डिपेंडेंस जो है वो प्रीवियस आउटपुट्स पे भी हो, जैसे इस इक्वेशन में है, तो देन सच अ सिस्टम इज an IIR system, infinite impulse response system. But if the dependence of output is only upon previous inputs, then such a system is called infinite impulse response system. If the dependence is only upon the previous inputs, then such a system is called finite impulse response system. So finite impulse response system, in case of finite impulse response system, the output can be determined non-recursively. In fact, there are no conditions of initial rest are needed. However, if
if it is an IIR system, if it is recursive, then we need to specify the initial rest conditions also. Okay, so this is an example. Let's suppose we have a system yn minus half y of n minus 1 is equals to x of n. So इसमें अगर हम इस टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं तो then yn becomes xn plus half y of n minus 1. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is the output at time instant n. It is not only dependent upon input at time instant n but also on previous output. This yn minus 1 is the previous output. So output is not only dependent upon current input but it is also dependent upon previous output. So here we need to specify the initial rest condition. अगर आप initial rest condition को जो कंडीशन है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई न करें तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. सो हम इसमें अज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो इनपुट है दैट इज इक्वल्स टू k delta n. x of n is k delta n. Delta n, you know, impulse function is, this impulse function is only have one non-zero value which is at n is equals to 0. So the input is just k times delta n, which means कि ये जो इनपुट है n is equals to 0 पे इसकी वैल्यू k है और इसके अलावा this input is 0 everywhere else. So इस इनपुट में हम कह सकते हैं कि this input x of n is 0 for n less than equals to -1, क्योंकि ये तो सिर्फ n is equals to 0 के लिए ही 1 होगी इनपुट. सो जब इनपुट 0 होगी तो we can assume that output is also 0. और ये जो assumption है ये इस वजह से है कि we are considering a causal LTI system. So causal LTI system with initial rest condition. So in that case जो है हमारे पास जो आउटपुट होगी वो 0 होगी जब तक इनपुट आपके पास 0 है. वो अगेन वही बात जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर कि we have two responses. One is called zero state response, another is called zero input response. So basically zero input response जो है इस सिस्टम का हम ये assume कर रहे हैं कि zero input response of this system is equals to 0, which means that this system have no amount of memory or no response from its state. Remember कि zero input response वो होता है जब आप input नहीं देते और उस वक्त भी अगर आपके पास output आ रही हो तो that is called zero input response. But zero input response of this particular system is equals to 0. So इस वजह से हम ये assume कर सकते हैं कि जब तक जो है वो x of n 0 है उस वक्त तक आपके पास output y of n भी 0 होगी. यानी जब तक आप input apply नहीं करेंगे output भी उस वक्त तक आपके पास अकर नहीं करेगी. So अगर आप ये assumption इस equation में put करें तो y of 0 will be x of 0 plus half y of -1. n की वैल्यू 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में. So y of 0 is x of 0 plus half y of 0 minus 1, which means y of -1. But we know that y of -1 is equals to 0, क्योंकि जब तक इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे आउटपुट आपके पास नहीं आएगी. So it means y of 0 is simply equals to x of 0. x of 0, x at n is equals to 0 is equals to k. So it means y of 0 will be equals to k. Okay, so next we have to compute y of 1. So y of 1 कंप्यूट करने के लिए हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे. जो प्रीवियस इक्वेशन हमने लिखी y of n was equals to x of n plus 1 by 2 y n minus 1. So if we put n is equals to 1, so y of 1 will be equals to x of 1 plus 1 by 2 y of 0. Now we have x of 1 is equals to 0. Input at time n is equals to 1 is equals to 0 because input was just a delta function, impulse function which only has one non-zero value and that value is at n is equals to 0. So ये x of 1 तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ y of 0. y of 0 की वैल्यू जो है वो हम इससे प्रीवियस स्टेप में कंप्यूट कर चुके हैं and that value is k. So y of 1 will be equals to half k.
इसी तरह से y ऑफ टू कंप्यूट करने के लिए हम n को 2 पुट करेंगे उसी इक्वेशन में। सो y ऑफ 2 विल बी x ऑफ 2 प्लस 1/2 y ऑफ 2 माइनस 1 विच इज y ऑफ 1। x ऑफ 2 इज अगेन इक्वल्स टू 0 क्योंकि इनपुट आपके पास इम्पल्स फंक्शन था जो कि सिर्फ n इज इक्वल्स टू 0 पे नॉन ज़ीरो है। सो x ऑफ 2 is 0 plus half y of 1. Now here we will put the value of y of 1 which we obtained in the previous step. So वो value put करेंगे तो we will get 1/2 square k। इसी तरह से y3, y4, y5 ये सारी values आप compute कर सकते हैं। एंड फाइनली y ऑफ n विल बी x ऑफ n प्लस हाफ y ऑफ n माइनस 1। सो x ऑफ n इज अगेन इक्वल्स टू 0 एंड हाफ y n माइनस 1 जो है वो हम प्रीवियस वैल्यू y n माइनस 1 की यूज़ करेंगे। सो y ऑफ n विल बी इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर n into k। So one point which you must remember here, that the output at any step, when you want to compute the output at any step, तो you need a value, previous value of the output। मसलन y2 कंप्यूट करने के लिए आपको y1 की वैल्यू चाहिए, इसी तरह से y1 कंप्यूट करने के लिए आपको y0 की वैल्यू चाहिए, yn को कंप्यूट करने के लिए आपको yn-1 की वैल्यू चाहिए। सो दिस इज अ रिकर्सिव प्रोसीजर जिसमें आप प्रीवियस वैल्यू ऑफ आउटपुट यूज कर रहे हैं टू कंप्यूट द करंट वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो करंट वैल्यू ऑफ आउटपुट कंप्यूट करने के लिए आपको प्रीवियस वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो रिक्वायर्ड है। सो रिकर्सिवली ये इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं IIR सिस्टम को। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास इनपुट थी जो x ऑफ n वाज k डेल्टा n, अगर हम k को 1 पुट कर दें तो इसका मतलब है x ऑफ n विल सिंपली बी इक्वल्स टू इम्पल्स फंक्शन। और जब आप किसी सिस्टम को इम्पल्स फंक्शन एज एन इनपुट दें तो सिस्टम का जो भी आउटपुट आती है दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। सो अगर k को 1 पुट किया जाए इस इक्वेशन में तो 1/2 रेज़ टू पावर n विल बी इक्वल्स टू h ऑफ n। इसके साथ u ऑफ n हमने इस वजह से मल्टीप्लाई किया है कि ये आपके पास जो है वो सिर्फ n की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इनपुट आपने अप्लाई की थी एट n इज इक्वल्स टू 0। सो इस वजह से नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है इम्पल्स रिस्पांस। सो इस इम्पल्स रिस्पांस को अगर हम प्लॉट करें तो आपके पास इसकी वैल्यू 0 पे 1/2 रेज़ टू पावर u ऑफ n तो खैर 0 से लेके इन्फिनिटी तक 1 होता है, यू ऑलरेडी नो। तो 1/2 रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। सो इसका मतलब है 0 पे इस इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। इसी तरह से अगर मैं इसको n को 1 पुट करूं तो then at n is equals to 1 this impulse function will have a value 1/2। अगर मैं n को 2 पुट करूं तो at n is equals to 2 this will have a value 1/2 square which is 1/4। इसी तरह से 1/2 cube which is 1/8। सो ये इम्पल्स रिस्पांस जो है वो आपके पास 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा। ऑल्दो इसकी वैल्यू जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद इंक्रीजिंग एंड ये वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी बट स्टिल इट विल एग्जिस्ट अप टिल infinity। So such a system which has an infinite impulse response is called an IIR system, infinite impulse response system। As compared to that we have another system in this discrete domain जिसका impulse response इस तरह से हो सकता है कि for example वो n is equals to 0 से start हो और किसी वैल्यू n is equals to 10 पे जाके end हो जाए। So such a system जिसका impulse response किसी finite वैल्यू से start होता है और किसी finite वैल्यू पे end हो जाता है, ऐसे सिस्टम को FIR कहा जाता है। वेयर एज कि ये वाला सिस्टम जिसमें हमारे पास एक एंड इस इम्पल्स रिस्पांस का इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है तो that is basically an infinite impulse response system or an IIR system। So in discrete domain we have two kinds of system, an FIR system and an IIR system। In case of FIR system, as we have already discussed in the previous slide, the output is only dependent upon inputs. There is no recursion, there is no part of output which needs to be utilized to compute the next value of output। But in case of IIR system this is necessary कि हर नई output की वैल्यू मालूम करने के लिए आप previous value को utilize करते हैं।
ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंस इक्वेशंस के बारे में बात की। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए या उनकी इनपुट आउटपुट की रिलेशनशिप को इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली, जब आप उसमें इनिशियल रेस्ट की कंडीशन जो है वो भी अप्लाई कर देते हैं तो डिस्क्राइब करती हैं। इसी तरह से डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में भी आपके पास जो डिफरेंस इक्वेशन है वो इनपुट और आउटपुट का एक रिलेशनशिप आपको बताती है, आपको ये बताती है कि आपकी आउटपुट जो है वो किस तरह से इनपुट के साथ रिलेटेड है, क्या वो प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट पे भी डिपेंडेंट है या वो सिर्फ प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ इनपुट पे भी डिपेंडेंट है। इसकी बेस पे हम दो किस्म के सिस्टम्स जो है वो इनकाउंटर करते हैं इस डोमेन में, एक आईआईआर और एक एफआईआर सिस्टम। होपफुली आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम एक और लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।